So today we are going to discuss about the Toltec teachings. So Toltecs are enlightened masters from the Mexico region. So what we commonly sometimes know as shamans. So these Toltecs are enlightened ones. So there is a book called Four Agreements, and everybody should read that book. It's an amazing book. So I'm just going to give a brief synopsis. So fundamentally, we all go through a kind of domestication process. As a child, when you are born, our parents, the belief system of the parents, the belief system of the society, the programming of the society, the teachers, the expectations of others, all those things mold our way of life, the way we think, the way we process, the way we live our life. You see, every child is happy, joyful. Joy and happiness is the very nature of the child. The child is by default joyful, but what happens to that very nature, very joy? As we grow up, as the child is growing up, what happens to the joy? We were all children once upon a time, and we were born very happy. We are born happy onto this planet Earth. But what happened to our happiness? This happiness is gone because of the so-called domestication process. So basically, it is the judgments, the inner judgments, the fear energy. The fear energy takes away the joy. The judgments, the guilt, the shame energy, this takes away our joy. And we suffer. We suffer in our personal lives. We suffer in our relationships. And we do the things which we don't want to do, but we do to please others, to have acceptance from others. So this is all domestication process. Because of this domestication process, what we call it as the virus has entered our programming. When the virus enters the programming, what happens? The system collapses. The program collapses. So our natural programming got corrupted. Our natural programming to be joyful got corrupted because of this virus. Because of this virus of fear energy, guilt energy, shame energy. All this comes under the domestication process. As a child, we've been trained. You do this, you are a good boy, you are a good girl. You don't do this, you don't listen to your father, you are a bad girl. You listen to your mother, you are a good girl. You don't listen to your mother, you are a bad girl. So we have this carrot and stick approach. You do something which your parents want, they reward you, they hug you, they kiss you. And you do some things which you want, but they don't want, then you are punished. They reject you. You are not loved. So this carrot and stick approach is the virus programming. And you cannot blame the parents because they are the victims of their own past. They got programmed from their parents. So the whole society is corrupted with this programming, with this bad programming. That's why there is so much of suffering. So this Toltec's teachings goes into agreement. Simple 4 points. They discuss these 4 points. They say you follow these 4 points and you will be able to come out of this suffering. So that is all these 4 agreements. So let me go into this. So let me share the screen. Okay. So this is the 4 agreements. So basically, fundamentally, why these 4 agreements are needed? These 4 agreements are needed
so that we come out of that programming, we come out of that virus, and we regain our joy. So let us see what are those four agreements. So the first one is be impeccable with your words. I will go through little detailed, but first you write down these four agreements. The first one is be impeccable with your word. That's the first agreement. Second agreement is don't take anything personally. And the third one, don't make assumptions. And the fourth is always do your best. So these are the four. So you follow these 4 points, then you will be able to regain your childlike nature. This is a statement of Jesus Christ. Unless you become a childlike, you cannot enter the kingdom of God. What is kingdom of God? Kingdom of God is nothing but joyful, blissful. If you are in kingdom of God, you are joyful, blissful. So when you follow these 4 points, you will regain your joy, you will regain your strength. You see, when as a child we are innocent and joyful, but as adults we lost our innocence. But through the wisdom we can regain our joy. Okay, so the child is joyful because of the innocence. As adults, we can regain our joy through our wisdom because we have the free will. We are grown up. We have the option, we have the choice to go back into joy. So the first one is be impeccable with your words. What you speak matters. So first is you have to be very, very careful with what you speak. Because all the negative programming has already happened in our childhood. There's nothing we can do about it now because it's in the past. Past is past. Gatam gataha. So what I can do today? What I can do today to make my life happy? So the point number one and the most important point and also the most challenging one, unless you are a meditator, you cannot follow this. So the point number one is be impeccable with your word. Impeccable. What is the meaning of impeccable? Impeccable means peccable. Peccable means sin. Impeccable means that which is not sin. So what is sin? Anything you do against yourself is the sin. This is the definition. The definition of a sin is anything you do against your own self is sin. So be impeccable with your word. So that means every word you speak, it should not be against you. So some people, they speak unconsciously negative words about themselves. They degrade themselves. They judge themselves. You know, they say, oh, it's not possible for me. I don't think I can do it. I don't think it's possible for me to do. So they speak very negative about their own capabilities. And people say, I don't think I can be a meditator in this lifetime. I don't think I can be a yogi in this lifetime. So again, negativity. And people say, I cannot sit for 2 hours meditation. It is not possible for me. They speak so much negative about themselves. They speak, you see, as the co-creator, as the children of God, we have infinite potential. We have infinite potential. That is the truth. We are all gods. We have come from God, so we are all gods. We have infinite potential. We can do anything we want. But we always speak negative. So that means the words we speak is against our own self. So that is a sin. Any words, any thoughts, any actions you do against your own self is a sin for you. So you should be impeccable. So every word you speak should be absolutely positive. It should be absolutely miraculous.
Your words should represent your truth. The truth is, you are gods. We are all gods. That is the truth. So we should always speak with integrity. What is integrity? Integrity is what you think, is what you speak, is what you do. Some people think something else, they speak something else, and they do something else. Whenever you are doing this, you will be in suffering. Remember this point, my dear friends. If there is no integrity in your life, there is suffering in your life. This is the most important point, integrity. You have to be authentic. You have to speak only what you feel in your heart. Yes, sometimes it goes against you, doesn't matter. Sometimes when you speak what is in your heart, you might be at the losing end. You might be at a loss. Materialistically, doesn't matter. You speak what is in your heart. When you start speaking what is in your heart, in spite of any consequences, then you are going to regain your inner joy. This is a bit challenging. Unless you are a meditator, it's not possible. It's challenging. I won't say it is not possible. It is possible, but as a meditator, it will be easy for you to speak, to only speak what is in your heart. And this doesn't happen overnight. It doesn't happen overnight. Overnight, you decide, okay, from today onwards, I will speak with integrity. And from tomorrow, you are speaking with full integrity. It doesn't happen. It takes time. You will unconsciously, you will make certain mistakes here and there. Again, try your best to try to gather the courage and say, okay, I will be more conscious. So here, awareness is the key word. You should underline the word awareness. Without awareness, it's not possible to be with integrity, because you need a lot of awareness to be within integrity. And this awareness you get from meditation. So to speak with integrity is very, very important to regain your joy. You can make an experiment that I will not speak anything. Before you speak any word, you can just try this experiment. Before you speak any word, or somebody asks you a question, before you answer anything, or before you open your mouth, just take 2 or 3 seconds. Pause, take 2 or 3 seconds. Think with awareness what word you are going to speak. Is it what you really mean in your heart? Just take 2 seconds gap before you speak. That will help you really speak what is there in your heart. Okay. And you should absolutely avoid any kind of words which goes against you. For example, if you are playing a game with your friend, okay, you are playing a chess game with your friend, and before the game finishes, you will start speaking, I think I know I will lose this game because you are a better player than me. I know I will lose the game in the end. So before the game finishes, you speak negative. And that negativity leads you to your own failure in the game. It is the same in the life. When you speak negative, your life is bound to be disastrous. Any negative word you speak is bound to be disastrous. So the word has so much strength. Hitler used the power of the word to bring the Second World War, to destroy millions of people. He used the strength of his words, the power of his words, to speak negative and to destroy the humanity. You see the power of word. One man misusing the word, the power of the word, brought the Second World War, killing millions of people. So powerful. And the word is equally powerful. You speak positive. The word is equally powerful. You can do this experiment. You can do this experiment. You tell yourself, I will always speak positive words. I will never speak negative words. And whenever you catch hold of yourself that you are speaking anything negative, immediately correct. Immediately correct yourself. And immediately replace the word with positive words, miraculous words. Do this experiment.
and see what is the outcome. Over a period of time, you see your life is transforming into more positive, into more miraculous, into more joyful. So you should always use the power of your word in the direction of the truth and love, friendship, oneness. You should always, the direction of every word you speak, the direction should be towards the truth and love. And you should not speak anything negative to others, towards others, because what you give comes back to you. Whatever the negative word you speak to another person comes back to you. And that is a sin for you. You speak anything negative towards another person is bound to reflect back on you, which will hurt you. So that is a sin for you. So this is the definition of sin. Any action you do which is not in the direction of truth and love is a sin. So this is impeccability. You should be impeccable with your words. And the practice of mauna really helps a lot. The more you practice mauna, the more you realize that you speak so negative, you speak so unnecessarily, that you blabber, that you speak that which you don't mean it. Simply you speak it. So you understand all those things when you practice more and more mauna. Mauna is a very important spiritual practice, to be impeccable with your word. So this is the first, my dear friends. So the second is, don't take anything personally. So this means people, for example, somebody is bad with you, somebody is scolding you, somebody is upset with you. That's not your problem, that is their problem. If somebody is nasty with you, that reflects their own problem, that reflects their programming, that reflects their conditioning they went through the childhood, doesn't reflect you. So nothing others do is because of you. Everything others do is because of their own negative programming they had in their childhood from their parents, from the society, and from their teachers. So don't take anything personally. It is their own dreams and it is their own reality. What is a dream? The so called life, what we call as life, is nothing but a greater dream. What we call it as so called real life is nothing but a greater dream. You see, when we are born, we are only this much size. And now we are grown big. And when we are born, when in our childhood days, we used to play, and there are so many trees, and the environment is different. But now you go back and see the places what you visited in your childhood, everything is changed. It's no more the same. So change is inevitable. That's a dream, that's not real. For example, as a child, you have grandparents, but what happened to them now? They vacate their bodies and go, but they are not there. So it's not real. Everything is a dream. What you call as life is nothing but a greater dream. So we have the choice to make our dream a beautiful dream or a dream of hell. So this so-called life is nothing but a dream. From the soul's point of view, from our soul point of view, this current lifetime is a dream. And we have a choice to make this dream beautiful, heavenly dream. Or we have a choice to make this a nightmare. So if somebody is projecting, if anybody is projecting anything towards you, it is their problem, not your problem. So don't take anything personally. And don't be worried about others' opinions. If somebody says, "Oh, you are looking fat. Oh, you are looking this. Oh, how come you lost your weight? How come your hair is falling? You know, how come you are doing like this?" If somebody is having any opinions, it is the problem with their vision. There's nothing problem with you. So you don't need to be bothered about others' opinions.
So if you don't take anything, but if somebody is judging you, if somebody is giving any opinions, then immediately the first thing which should come in your mind is, okay, so they have the virus programming. So have compassion. Don't take things personally. When you don't take things personally, then you avoid a needless suffering. You don't go into suffering unnecessarily. For example, you get ready, you take 1 hour to put a nice makeup, to wear a nice dress, and you go to your party. And then your friend says, "Oh, how come you're looking so pale? Why are you looking so pale?" And that's it. Gone. Really? Am I looking pale? So you are upset. So all your effort of 1 hour of makeup is gone in the wind, and you are no more enjoying the party. You become conscious, you become self-conscious. So don't take anything personally, any judgments, any opinions of others. Don't take personally. It is their problem. Okay. So this is the point number two. When you do this, you avoid needless suffering. Okay. So your focus, remember this point, my dear friends, your focus should be always about your own inner programming. Don't worry about others' programming because everybody has a virus. The others' opinion are their virus, their problem. So we have to focus on our own virus programming. So the more and more you become aware of your own virus programming, the more you become impeccable with your words. You don't speak anything negative and you don't worry about others' opinions. Then naturally you avoid suffering. You regain back your strength. You get back your joy naturally. This is the second point. And the third point is don't make assumptions. This point helps a lot in relationships, in every relationships, especially husband-wife relationships. It really helps a lot. Don't make assumptions. In the marriage system, every wife makes an assumption that my husband will be so loving and my husband should understand everything I want. Without me speaking a single word, he should understand what is in my heart. And every woman makes this assumption, and every man also makes the same assumption. They make assumptions. Oh, you've been living with me. We are married for 10 years. You should know what I want. You should know what food I like. You should know what color dress I like. So they make assumptions. And because of these assumptions, the relationships goes into a turmoil and unnecessary suffering is there. So never make any assumptions, any kind of assumptions that, you know, how come I'm so kind and I'm such a nice person and nobody acknowledges me. So you assume that everybody should acknowledge that you are a nice person. That is also an assumption. Don't make any assumptions. Find the courage to express what you really want. Ask questions. If you have any doubts, don't make any assumptions. Just ask. You want clarity. You are listening to some workshops, some teachings. You have any doubt, don't make any assumptions. Don't fill in the blanks on your own. Ask the question. Have the courage to ask the question. Get the clarification. And also, if you want somebody to understand you, you should speak explicitly. You should speak explicitly, as clearly as possible, so that there is a possibility others can understand you. Whatever you want others to understand, you have to be explicit. This is very, very important. And if you can stick on to this point, most of your relationship problems are already solved. You avoid a lot of misunderstandings, sadness, all the unnecessary drama in the relationship is solved. You take the relationship in the right direction. You take the relationship to a fulfilling relationship, to a happy relationship, to a complete relationship where you rejoice each other's strength. Every relationship, whether it is a friendship or mother and daughter relationship or father and son or husband wife, any relationship, you should explicitly make assumption. I'll give you an example. Suppose the mother is not feeling well, no, and she is lying on the bed, and the son is staying somewhere in the neighborhood, and he visits the mother, and he comes, he see
The mother is lying on the bed. He asks, okay, how are you doing? The mother is saying, oh, feeling feverish, I'm taking rest. So because the mother is saying, I'm taking rest, so he said, okay, okay, mama, take rest. I'll see you later. So the son went back. And then the mother is crying. The mother is crying because, you see, after getting married, he started ignoring me. He didn't even ask, did I eat anything? He didn't even ask, is there anything I can help you in the cooking? He never asked. He simply went away. So the mother is assuming the son should help her to give the food. But the son doesn't know that. The son heard the mother is saying, I'm resting. So the son said, okay, I don't want to disturb you. And he left. You see, the assumptions create so much confusions. And your relationships will become more meaningful when you start communicating what exactly you want. And if somebody is not understanding you, don't blame them. Never blame them. If somebody doesn't understand you, that is your problem. That's not their problem. If somebody doesn't understand you because you never spoke explicitly, you never communicated crystal clear. So we should take the responsibility. So it is our responsibility in our relationship. Most of the time, the husband wife they quarrel, they fight because of these assumptions. As a husband, you should understand me. As a husband, you should have that much common sense. Come on, excuse me. The husband is not born with the programming that he should understand the wife. He should understand what is in the mind of the wife, what is in the heart of the wife. No, husband cannot do that. Similarly, wife also cannot understand the husband unless the husband speaks. Very, very important. And the fourth point is always do your best. Because while you are following the point number one, point number two, and point number three, you are bound to um, make mistakes in the first attempt, but don't get disheartened. Try again, try again. Do your best. Again and again, do your best. Practice, practice, practice. Practice makes anything. Practice gives perfection. Practice makes man or woman perfect. So, first time you want to be impeccable with your word. Okay, you blabbered. Catch hold of yourself and don't judge yourself. Oh, okay, unnecessarily I spoke. Maybe I cannot do this. No, don't judge yourself. Try again, try again. Do your best at any given point of time. Do your best. Sometimes your energy is very low and your best is different. Sometimes you are full of energy, your best is different. So at any point of time, our best keeps changing. And don't expect the results. Simply do your best. When you do your best, what happens? When you do your best, then there is no regret. This is the main advantage. When you do your best, there is no regret. There is no self criticism. There is no self judgment. You have this understanding. I have done my best. That's all. So, doing your best in any given situation always helps you to come out of a lot of guilt energy, the self blame, the self rejection. You will be out of all those things when you do your best. So, these are the four fundamental points that Toltec teaches. And there is a fifth point which says, always be. This fifth is 4 plus 1, which is another book. So this says, always be skeptical. When you're listening to others, you just have the discernment to see what is the intent behind every word another person is speaking. You question everything you hear, but don't doubt. Don't have the doubt. Don't reject, but listen very carefully. Then you will understand the intent behind the words of another person. Be open. So when you understand the intent behind another person, then you are in a better position to deal with the given circumstances and the given situation. Because you are working on your virus, but the virus is there with the other people. So how do you become immune to others' negativity affecting you? So be skeptical. Use your capacity to listen, hear, and
Don't blindly take the words. Go behind the intent. Sometimes the words cannot express the meaning of what we want to communicate. So don't go with the dictionary meaning of the words. Always go with the intent. What is the intent? Why is he speaking those things? What does he really wants? Go with the intent. When you go with the intent, then understanding becomes easier. Then there is harmonious relationships. There is a lot of friendship. Okay. So these are basically 4 points. The first 4 points are important. The fifth one is more an added point. Again, I will repeat. We should meditate in order to have awareness. Unless we have awareness, we cannot have integrity. And unless you have integrity, you cannot be impeccable with your word. And this is the most important point. And without this, you cannot enter the kingdom of God, which is being in a joyful state, being in a state of joy. So this book is simply for the people who says, okay, sir, I know I've gone through a lot in my childhood. I know I have a lot of stuff going on, but just give me some simple tips. Give me some simple tools. Yes, I am meditating. But I want to focus on my self-mastery. These 4 points comes under self-mastery. Remember yesterday in Raja Yoga, we spoke about what are the benefits of Raja Yoga. So the first is being friendly with all the living beings. The second is self-mastery. So these 4 points comes under the self-mastery. So the more and more you ask, okay, give me some simple tools, give me some easy points so that I can start working on myself. So these are the 4 points. Be impeccable with your word. Don't take anything personally. Don't make assumptions. And always do your best. When you follow these 4 points, then you are working on your self-mastery. So this is the essence of it, my dear friends. So now Neetaji will translate and she will add her own points. हो सके तो जरूर इस बुक को पढ़ना. बहुत प्यारी हिंदी में लिखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. तो ऐसे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसके नोट्स बना के रखी हूँ, पर मैं बहुत शॉर्ट में जितना सर ने बताया है उतने को ही समराइज करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि टॉल्टेक क्या है. टॉल्टेक एक संस्कृति का नाम है जो मैक्सिको में पनपा था, काफी पुराना है. और डॉन मिगल उनके एनलाइटेड मास्टर्स हैं जिन्होंने ये 4 एग्रीमेंट्स की बुक लिखकर हम सभी लोगों के साथ शेयर करी है. इन्होंने बताया है कि हम सभी जब पैदा होते हैं तो एक जॉय, एक खुशी, एक आनंद के साथ आते हैं, पर वो हमारी खुशी, हमारा जो स्वभाव रहता है, जो आनंद स्वभाव रहता है, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाता है. कैसे नष्ट होता है? क्योंकि हमारा परवरिश, हमारा जो परिवारीकरण होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक पालतू पशु को हम ट्रेन करते हैं. हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे फील करना है, कब किसी से क्वेश्चन पूछना है, किसके ऊपर संदेह करना है, किस पे विश्वास करना है. ये जो भी प्रोग्रामिंग है हमारी डोमेस्टिकेशन के दौरान हमको दी जाती है. और जैसे जैसे हम इन सब ढांचों में ढलते जाते हैं हमारे अंदर ही एक जज तैयार हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अगर हम अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमको रिजेक्ट कर देगी. तो स्वीकार होना चाहिए, हमको वो स्वीकारें. तो हमारे अंदर एक जज पैदा हो जाता है, जज जो पूरे समय बताता है कि ये सही है, ये गलत है. हम सिर्फ अपने को ही जज करते, कुत्ते, बिल्ली, हम अपने वातावरण, अपने पेरेंट्स, हर एक को हम जज करना शुरू कर देते हैं. ईच एंड एवरीथिंग हम जज करते हैं. तो हमारे अंदर एक जज भी तैयार हो जाता है और हम अपने आप को पीड़ित भी बना लेते हैं. अर्थात जज भी हम हैं और पीड़ित भी हम हैं.
पीड़ित का मतलब जो सर ने कहा है कि हमारी फियर है, हमारी गिल्ट है, हमारी शेम एनर्जी है, वो हमें विक्टिम बना देती है। तो जब भी हम पैदा होके बड़े होते जाते हैं, इस परवरिश के दौरान हमारी जॉय, हैप्पीनेस सब चली जाती है और एक हमारे में प्रोग्रामिंग भर दी जाती है कि किस तरीके से चलना है, कितना अच्छा बनना है, हर चीज हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है। और हमारा पूरा ध्यान रहता है कि लोग हमको एक्सेप्ट करें। तो ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो हमारे जॉय को नष्ट कर देती है। सर ने इसे ही वायरस कहा है। वायरस अर्थात जो फियर, गिल्ट एनर्जी है, जिसके कारण हम विक्टिम महसूस करते हैं या जो हम जज बन जाते हैं, अपने आप को जज करते हैं, उसे वायरस कहा है कि हमारा खुद का वायरस हमारे खुशी को खराब कर देता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छे बच्चे हो, अगर कहना मानोगे तो आप अच्छे बच्चे हो, अगर आप पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो आप उदंडी हो, रिबेलियस हो। ये सब चीजें हमको सिखाई जाती है और हमको बचपन से ही दंड और पुरस्कार के रूप में हमारे जीवन को निर्धारित किया जाता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको प्यार करते हैं, हक करते हैं, किस करते हैं, और यदि हम उनके आशाओं के विरुद्ध काम करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, हमें हमारी लेबलिंग कर दी जाती है, हमें नालायक, हमें बेवकूफ बता दिया जाता है। तो ये जो दंड और पुरस्कार का जो भाव है, उसके कारण धीरे धीरे हम पीपल प्लीजर तो बनी जाते हैं, सेल्फ रिजेक्शन भी हम अपने आप को करते रहते हैं, अर्थात खुद की निंदा भी करते रहते हैं। तो पर हमको अपने पेरेंट्स के प्रति कोई भी या सोसाइटी के किसी के लोगों के लिए भी हमको गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी वायरस उनके पेरेंट्स ने डाला था। ये सदियों से चलता आ रहा है। अज्ञानता के कारण हर पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश में यहीं पे चूक जाता है और हमने भी वही किया है। तो जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो हमें वायरस दी गई है वही हमारे दुख का कारण है। और अगर हम इस वायरस से मुक्त हो पाएंगे, अर्थात हम एक जो 4 एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे, तो हमारे पास फिर से वैसे ही खुशी और आनंद आ जाएगा। जैसे जीसस ने कहा था कि अगर मेरे ईश्वर के राज्य में आना है तो बिल्कुल बच्चे की भांति बन जाओ। तो बच्चे की भांति का अर्थ है कि उतनी ही मासूमियत, उतनी ही आपको इनोसेंस आपके में रहनी चाहिए। पर हम जैसे बड़े होते हैं हमारी मासूमियत खो जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल हमारे सामने वाले के ऊपर सामने वाले के पास रहता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो। तो अगर हम ये 4 एग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे तो हमारे में स्ट्रेंथ आएगी, हमारी अपनी मासूमियत और हमारा नेचर, जो स्वभाव है हमारा, वो वापस आ जाएगा। तो सर ने यहाँ पर नहीं बताया है, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी। मिटोटे, जैसे इन्होंने टॉलटेक वाले ने मिटोटे कहा है कि हमारा मन मिटोटे है, एक धुंध की माफिक है। मिटोटे का अर्थ होता है माया। और जैसे हम परवरिश के दौरान अपने आप को हम जब रिजेक्ट करते जाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं दूसरों के समान स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाता, मैं बहुत अच्छा लिख नहीं सकता, जितना हम अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट करते हैं, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ये सेंटेंस मुझे सबसे प्रिय है। सेल्फ रिजेक्शन इज द बिगेस्ट सिन। सबसे बड़ा पाप होता है अपने आप को अस्वीकार करना, तभी सेल्फ लव की इतनी वैल्यू है। तो ये मिटोटे का अर्थ होता है मन और माया, जिसके कारण हम फंसते हैं। तो फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पेक्केबल विथ योर वर्ड्स, मतलब निष्पाप, कोई भी त्रुटि रहित आपको बातें बोलनी है। देखिए, शब्दों में एनर्जी है। शब्द साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं और साम्राज्य गिरा भी सकते हैं। 2 टाइप के मैजिक हम टॉलटेक ने बताया है वर्ड्स के दौरान, एक है व्हाइट मैजिक, एक है ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक वो होता है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करके, किसी की प्रशंसा करके उसको जब हम मोटिवेट करते हैं तो वो और उत्साहित होकर काम करता है, तब उसे हम कहते हैं सफेद जादू, सफेद जादूगर। और एक लोग होते हैं ब्लैक मैजिशियन, जो अपनी कड़वी जबान से गंदे वर्ड्स बोल के सामने वाले को हताश कर देते हैं, और इतना हताश कर देते हैं कि कभी कभी उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता।
टॉलटेक ने नहीं बताया है, मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे अपने इंक्लूड कर रही हूँ कि महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ही द्रौपदी के सेंटेंस के लिए कहा था कि अंधे के पुत्र हो, दुर्योधन को जब उन्होंने कहा था कि अंधे के पुत्र हो तुम, ऐसे ही कुछ कहा था, तो महाभारत छिड़ गई थी उस शब्दों के कारण। कहा जाता है कि कृष्ण ने कहा था द्रौपदी से कि अगर उस समय तुमने वो वर्ड्स नहीं बोले होते तो आज ये महाभारत नहीं होता। ये ब्लैक मैजिक का है, मतलब उदाहरण मैं बता रही हूँ कि कभी कभी साम्राज्य गिरा भी सकता है वर्ड्स। और दूसरा एक मैं व्हाइट मैजिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, मर्लिन मोनरो का, क्योंकि मैं जब उनकी बायोग्राफी पढ़ रही थी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत ही साधारण स्त्री थी और एक सैलून में काम करती थी। एक बार जब उसके क्लाइंट आते हैं और वो बाल काटते रहती है तो वो जो मैन था, जो पुरुष था, वो कहता है मर्लिन को कि तुम्हें मालूम है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मर्लिन हमेशा अपने आप को बदसूरत समझती थी क्योंकि बचपन में ही उसके दिमाग में ये भर दिया गया था कि वो खूबसूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की और उसे कहा कि तुम फिल्मों में ट्राई करो, तुम बेहद खूबसूरत हो, उसकी बातों में जो सफेद जादू था, जो व्हाइट मैजिक था, मर्लिन मुनरो ने लिखा है कि मैं पहली बार उसके जाने के बाद आईने में अपने आप को मैंने देखा और देखा कि वाकई मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और उसके बाद आपको जर्नी मालूम है कि मर्लिन मुनरो कितनी बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो ये सफेद ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक हमारे खुद के वर्ड्स में रहता है, चाहे वो हम अपने लिए बोले चाहे किसी और के लिए बोले। और ये गॉसिप करना उतना ही जहर होता है, क्योंकि हम जब दूसरों को जज करते हैं तो अपने जो भी हम दूसरों के लिए नेगेटिव वगैरह बोलते हैं वो सब हमारे पास ही वापस आता है। तो सेल्फ क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, खुद को जज भी नहीं करना है। जैसे सर ने कहा कि अपने लिए एक भी शब्द आपको गलत नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मैं योगी नहीं बन सकता, मैं 2 घंटे के लिए ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि हमें मालूम तो है कि हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हम अगर ईश्वर के अंश हैं तो हम भी ईश्वर हैं, ये सब हमें मालूम है। पर उसके बावजूद हम अनजाने में ऐसे वर्ड्स को अपने लिए बोल देते हैं। तो अपने शब्दों पे हमको ध्यान रखना है और शब्दों को बोलना है इंटीग्रिटी के साथ। वही शब्द बोलना है जिसके अर्थ हो। तो इंटीग्रिटी क्या है कि जब आप जो सोचते हैं वही आप बोलते हैं और वही आप जब करते हैं, अर्थात आप बोलना, करना और सोचना जब एक अलाइन होता है उसे ही हम इंटीग्रिटी कहते हैं। तो आप जो भी बोल रहे हैं वो आप सोच रहे हो तो ही बोलिए, मन में कुछ और है और जबान में कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इंटीग्रिटी से नहीं बोलेंगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको, आपके इनर जॉय को नष्ट कर देंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा टूल है कि आप मेडिटेशन करते जाइए, आप स्वयं ही ऑथेंटिक होते जाएंगे, प्रामाणिक होते जाएंगे, सच्चे बनते जाएंगे और आप अपने लिए पॉजिटिव और मिराकुलस वर्ड्स बोलेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। व्हाइट मैजिक को यूज करके, दूसरों को प्रेज करके आप उसकी जिंदगी में कुछ आशा की किरण डाल सकते हैं। तो आपको पूरे समय अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है। और सर ने कहा है कि सिन, जैसे इम्पेकेबल का अर्थ बताया था कि विदाउट सिन, इम्पेकेबल का अर्थ होता है बिना पाप, मतलब पाप रहित शब्द। तो पाप क्या है? पाप वो है जो आप अपने विरुद्ध करते हैं। जैसे आपने किसी को कह दिया कि तुम बहुत गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो। कई बार होता है ना, फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में बोल देते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, क्रिटिसाइज कर देते हैं सामने में। तो हमको लगता है कि हमने सामने वाले की बेइज्जती कर दी, सामने वाले को नीचा कर दिया। पर ये हम अपने साथ ही पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सामने वाला सुन रहा है वो हमारे साथ क्या उतने प्यार से, उतने अच्छे से बात कर पाएगा? अगर मैं आपके लिए कोई गलत वर्ड्स यूज करूंगी तो क्या आप उतने ही प्यार और अच्छे से मुझसे बात करेंगे? नहीं। फिर मैंने जो बोला वो आपके विरुद्ध नहीं बोला, अपने लिए ही विरुद्ध बोला, क्योंकि मैंने अपनी छवि को खराब कर दी। आप मुझसे वैसा वाला दोस्ताना और प्यार वाला व्यवहार नहीं रख पाएंगे जो पहले था। तो ये जो पाप हुआ वो मैंने जो बोला वो मैंने अपने ही विरुद्ध कर्म कर दिया। तो सर ने कहा है कि ऐसे वर्ड्स हमको यूज करना चाहिए जो हमारे खिलाफ न जाए,
और ना ही किसी को इतना हताश कर दे कि सामने वाले की जिंदगी बदल जाए। अगर एक किसी लड़की बच्ची को अगर आपने कह दिया, उसके कोई क्लोज रिलेटिव ने बोल दिया कि तुम काली हो, तुम बदसूरत हो, सारी जिंदगी वो इसी धारणा में बिता देगी कि मैं काली हूं, मैं बदसूरत हूं। तो ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि सामने वाले की जिंदगी को वो कितना बुरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बाद में दिया था सर ने, जो इस बुक में भी लिखा हुआ है, कि एक लेडी काफी थकी हुई जब घर में आती है और उसको आराम की जरूरत है, और उसकी बेटी जो उसको बहुत प्यार करती थी वो उस समय जोर जोर से गाना गाते रहती है। माँ को आराम चाहिए, बेटी को गीत गाना है। हो सकता था कि वो बहुत थकी है तो ये भी कह सकते थे कि बेटा अभी चुप हो जाओ, तुम मत गाओ, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे आराम करने की जरूरत है। पर हम कभी कभी अपने गुस्से में अपने होश को खो बैठते हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। और उसने जोर से चिल्ला के, अपनी बेटी को जोर से चिल्ला के कहा कि इतने गधों के समान क्यों गा रही हो बेसुरा, चुप हो जाओ। उसका बस इतना कहना था कि बेटी हमेशा हमेशा के लिए गाना गाना भूल गई। उसके पहले तक के वो स्कूल्स में गाती थी, पर उसकी मदर के डांटने से उसने जिंदगी भर के लिए गाना छोड़ दिया। उसने अपने अंदर एक एग्रीमेंट बना लिया, एक अनुबंध बना लिया कि मैं बेसुरी हूं, तो उसने गाना बंद कर दिया। तो ये जो हम ब्लैक मैजिक उस माँ ने डाला अपनी बेटी के ऊपर, वो कॉन्शियसली नहीं डाला, सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि हम अवेयर नहीं रहते हैं अपने वर्ड्स के प्रति। तो हमारे को पूरे समय अवेयर रहना चाहिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। और सर ने जैसे कहा कि बोलने के पहले 5-7 सेकंड रुक जाओ, पॉज लेके आप सोचो, फिर आप ये वर्ड्स को बोलो। तो आपकी अवेयरनेस की है कि आप क्या इंटीग्रिटी की, कि आप जो बोल रहे हैं वही सोच रहे हैं, और दूसरा कि सामने वाले पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको हमेशा अवेयरनेस की पकड़ के रखना है और अवॉइड करना है अपने खिलाफ शब्दों को बोलने के लिए और किसी और के लिए भी। एक और एग्जांपल देके सर ने बताया कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहे हैं और हार गए, और आप कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं हार जाऊंगा, तुम ही जीत जाओगे, तो आपने गेम शुरू होने के पहले ही आपने ये थिंकिंग सेल्फ टॉक कर लिया, अपने आप को पहले ही हार घोषित कर दिया, तो आप हारेंगे ही, क्योंकि वर्ड्स हमारे फ्यूचर को भी बनाते हैं। हिटलर ने, एक अकेले व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों की हत्याएं की है सिर्फ अपने वर्ड्स के पावर के कारण। क्योंकि जब वो हिंसात्मक भाषण देते थे तो कहा जाता है कि जितने लोग भी उसके भाषण को सुनते थे वो बहुत ही उत्तेजित हो जाते थे हिंसा करने के लिए। तो एक व्यक्ति ने करोड़ों लोग की हत्या सिर्फ अपने जबान के, अपने वर्ड्स के पावर के द्वारा की है। तो आप समझिए कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलो, और यदि सर ने कहा है कि अगर कभी कभी गलती हो जाती है, हम अपनी अवेयरनेस खो देते हैं और नेगेटिव वर्ड आपके मुंह से निकल भी गया, तो आप तुरंत अपने को अवेयर होकर उसको पॉजिटिव वर्ड्स बोल के उसको न्यूट्रलाइज करिए, और ध्यान रखिए कि कम से कम आप इस चीज को करें, तभी आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके वर्ड्स हमेशा प्यार से भरे हों, आपके वर्ड्स हमेशा सत्य से भरे हों, तभी आप सत्य, प्यार और अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। कोई भी दूसरों के लिए भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है, वही सब आपके पास आएगा। और यदि आप मौना को की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस इम्पेकेबल वर्ड्स बोलने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि मौन के द्वारा आप समझ जाएंगे कि आप कितना व्यर्थ बोलते हैं और कितने नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आपको कहाँ कितना बोलना है, कब बोलना है, वो सब की समझ आपको मौन के प्रैक्टिस के द्वारा ही आएगी। दूसरा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट अर्थात क्योंकि सर ने काफी शॉर्ट में बताया, तो टॉल्टेक ने कहा है कि जीवन एक सपना है। हमको जो परिवारीकरण में, हमको जो परवरिश के दौरान जो हमको सिखाया जाता है, उसको उन्होंने एक ड्रीम कहा था। वो हम अनुबंध बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये उसी को ही तोड़ने के एग्रीमेंट बता रहे हैं वो, कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई भी किसी भी चीज को हम सुनते हैं या देखते हैं तो तुरंत अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ये मेरे लिए बोला गया है, ये मेरे लिए ही कहा गया है। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि
अगर मान लीजिए मैंने ग्रुप में कोई एक मैसेज डाला, अगर कोई मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज है तो वो उस मैसेज को देख के सबसे पहले यही सोचेगी कि नीता ने मेरे लिए डाला, जबकि नीता जब डाल रही थी तब उसको वो मैसेज बहुत प्यारा लगा था और वो किसी को टारगेट करके नहीं भेज रही थी। तो ये मोस्टली होता है कि तुमने मेरे लिए डाला था, 2-3 बार मैंने सुना भी है ऐसा। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि मुझे जो पसंद आते हैं मैं उसे भेजती हूँ, मुझे टारगेट नहीं रखना रहता है कि किसके लिए मैं डाल रही हूँ। यदि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई देख के आपके जाने के पहले आपको आपके एंटर करते ही कोई हंसा, तो आपको हमेशा लगेगा कि वो आपको देख के हंस रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं। हो सकता है आपके आने के पहले वो किसी और बात पे हंस रहे हो। तो हम हमेशा हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं कि वो हमारे लिए बोला गया है, हमें टारगेट किया गया है, क्योंकि हमारी परवरिश के दौरान जो हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो डर है, हमको फियर है कि अरे लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, वो हमारा उभर के आता है। तो ये जो सेकंड एग्रीमेंट है, आप मिगल ने कहा है कि यदि कोई मुझे अच्छा कहता है कि मिगल तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तो मैं उसे नहीं सह लेता। अगर कोई कहता है कि मिगल तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत गंदे हो, तो मैं उसे नहीं लेता, क्योंकि मैं अच्छा हूं नहीं हूं मैं जानता हूं। मेरे को किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मतलब दूसरों के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। तो जब मेरे को वैलिडेशन ही नहीं चाहिए किसी का अच्छा और बुरा का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा मान करे कोई अपमान करे। सामने वाला जो भी बोल रहा है मैं उसे समझ जाता हूं कि उसके खुद के वायरस हैं, उसका खुद का एक सपना है, उसका संसार है। क्योंकि हम सभी का माइंड जो मिटोटे है वो अपना अपना एक संसार बना के रखा है। आपकी परवरिश दूसरे तरीके से हुई, मेरी परवरिश दूसरे तरीके से हुई, आपके जीवन के अनुभव दूसरे हैं, मेरे अनुभव दूसरे हैं। तो आपकी जो पिक्चर है जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सब आप हैं, आपकी अपनी कहानी है। मेरी पिक्चर में मैं सब कुछ हूँ, डायरेक्टर एक्टर सब कुछ। तो हर एक का अपना अपना एक संसार है। तो यदि कोई सामने वाला ब्लैक मैजिक वर्ड्स बोल रहा है तो मुझे ये समझना चाहिए ये उसका वायरस है या ये उसका प्रोजेक्शन है जो वो मेरे ऊपर डाल रहा है। तो मुझे किसी की भी अपमान को पर्सनली नहीं लेना है और हमेशा आपको इम्यून रहना है, मतलब अपने को प्रोटेक्ट करके रहना है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तभी आप पीड़ित होना छोड़ दोगे। दूसरों की राय की चिंता मत करो। दूसरे कहते हैं मोटे हो काले हो जो भी है वो उनका नजरिया है, आपका नजरिया नहीं है। सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि आप एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, 1 घंटा तैयार होने के बाद यदि कोई फ्रेंड आपको आके कहता है कि अरे तुम तो बहुत ही बुरे दिख रहे हो, तो सारी पार्टी में आप अपने को बहुत ही हीन महसूस करेंगे और उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको इम्यूनिटी बनानी है दूसरों की ब्लैक मैजिक वर्ड्स के लिए। जो बोल रहे हैं उनका वायरस है, उनका सपना है, अपना प्रोजेक्शन है, उनका गार्बेज है। और उनसे हमको करुणा रखनी है कि उनका वायरस प्रोग्रामिंग कितना गंदा है कि वो हमारे को नीचे करने के लिए ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो आपका पूरा ध्यान अपनी इनर प्रोग्रामिंग पे रहना चाहिए कि मेरी प्रोग्रामिंग में कहीं वायरस तो नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, अपनी इनर प्रोग्रामिंग में ध्यान दीजिए। तीसरा है डोंट मेक एजम्पशन। कोई भी आप अनुमान मत लगाइए। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे कॉमन चीज होती है कि मैं 10 साल से शादी किया हूँ और मैंने शादी की हूँ तो मेरे हस्बैंड को मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरे मन में क्या चल रहा है। हम हमेशा अपने ही चीजों को अपने ही मन को के अनुसार काम चाहते हैं, पर हमको कभी भी कोई भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं अच्छी हूं तो मैं सभी लोग मुझे अच्छा कहें, सभी लोग मुझे एक्नॉलेज करें, ये सब भी आपको नहीं रहना चाहिए। आपको अपने मन में स्पष्टता रखनी चाहिए कि
कि लोग जो कह रहे हैं, मतलब जो आपके बीच में रिलेशनशिप में जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप जाके क्लियरिटी के लिए आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा सोच रही थी, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप पूछिए, आप अपनी बात को सही तरह से बोलिए। सर ने कहा है कि सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज में सॉल्व तभी होगा जब आप अपनी बात को सही तरीके से बोलेंगे। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके आप क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत फहमियां हमको इसी से ही होती हैं कि मैंने ऐसा सोचा, वो सामने वाला ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है। तो हर रिश्ते, चाहे माँ बाप माँ बेटी का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, तो भी आप एज्यूम मत करें। सर ने एक एग्जांपल दिया था कि माँ बीमार है, उसको बुखार है, वो बिस्तर में पड़ी हुई है, तो बेटा पड़ोस में से होके आता है और पूछता है कि मम्मी को कि तुम कैसी हो मम्मी, तो वो कहती है कि मुझे बुखार है, मैं आराम कर रही हूँ। बेटा ये कह के चला जाता है कि ठीक है मम्मी रेस्ट करो आप, और चला जाता है। पर माँ तुरंत एज्यूम करने लग जाएगी कि उसने शादी करने के बाद कितना स्वार्थी बन गया है, मैंने खाना खाया कि नहीं, मैंने दवाई ली कि नहीं, मुझसे मदद के लिए पूछा भी नहीं और चला गया। क्योंकि हम अपने एज्यूम करते रहते हैं, जबकि बेटे ने तो यही समझा था कि मेरी माँ आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। इस बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमको अच्छे से संवाद करना है अपने रिश्तों में, अनुमान धारणा कभी भी नहीं लगानी है, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। जितना आप संवाद करेंगे गलत फहमियां आपकी दूर होती जाएंगी, आपका दुख दूर होते रहेगा और आप कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगी। चौथा जो एग्रीमेंट है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ करिए। जो 3 एग्रीमेंट है उसको करने के लिए चौथे की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं त्रुटि रहित वर्ड्स बोलूं, इम्पेकेबल वर्ड्स बोलूं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक रात में ये सब चीजें नहीं होंगी, तो आप बार बार गिरेंगे, बार बार संभलेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते जाएंगे इन तीनों एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, उतना ही आप उसमें सफल होते जाएंगे। कई बार जब हमको कोई काम करने दिया जाता है तो हमारी एनर्जी कम रहती है, और कभी कभी हम एनर्जी से फुल्ली चार्ज रहते हैं। तो कभी हम अच्छा काम कर सकते हैं, कभी अच्छा काम नहीं कर सकते, तो रिग्रेट नहीं करना है। पर जितनी भी उस समय आपकी अवेलेबल है आपकी एनर्जी, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। जब आप अपने पूरे तन मन से आप उस काम को कर लेंगे, तो उस समय आपको काम करने के बाद अगर कोई आके कहेगा भी कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि मैंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तब आप, कोई कितना भी आपको आके अपमानित करना चाहे या क्रिटिसाइज करे, आप खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, न ही जजमेंट करेंगे, बल्कि आप आशा से भरपूर रहेंगे कि यस मैंने पूरा का पूरा 100% वो काम किया। तो आपको ये चौथा पॉइंट है कि अपना कोई भी काम पूरे 100% के साथ आपको देना है। और इसके द्वारा आप जो भी काम करेंगे आपको बहुत खुशी होएगी। और जैसे जैसे आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते जाएंगे, आप धीरे धीरे परफेक्ट मास्टर बनते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपके सर्वश्रेष्ठ काम करने के द्वारा आप मास्टर बन जाएंगे। तो सर ने कहा है कि फिफ्थ एक और है, स्केप्टिकल, मतलब आप संदेहवादी नहीं रहे। अपना विवेक आपको यूज करना है, आपको विवेक बुद्धि से यूज करना है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, उस समय कोई रिजेक्शन नहीं रहेगा। आप दूसरे के उद्देश्य को आप समझ सकते हैं कि दूसरा वाला मुझे मेरे अपमान के लिए या मुझे लिए ऐसे बुरे वर्ड्स क्यों बोल रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। आप इसके लिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। और आप अगर डायरेक्ट बात करके उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप संदेह से निकल सकते हैं और आपके पास ज्यादा से ज्यादा दोस्ती हो सकती है। 4 एग्रीमेंट्स में सिर्फ 4 एग्रीमेंट्स के बारे में ही बताया गया। ये फिफ्थ वाला एक अलग से बुक है जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। बस इतना ही लास्ट में कहूंगी कि जो हमारे
पुराने एग्रीमेंट्स हैं जो हमारे को लेबलिंग करके दे दिया गया है, उसको हमको तोड़ने के लिए टॉलटेक ने बताया है कि 3 की पॉइंट्स हैं। आपको मास्टरी करनी पड़ेगी अवेयरनेस पे। पूरे समय आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके प्रति भी आपको अवेयर रहना है। कर्म के प्रति तो आप रहेंगे ही, पर जो सोच रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, उसके प्रति भी आपको अवेयर रहना है। और आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, मास्टरी ऑफ अवेयरनेस और मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने रूपांतरण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने आप को इस वायरस से दूर करिए, अपने आप को इन चारों एग्रीमेंट्स के लिए प्रैक्टिस करिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो मास्टरी ऑफ इंटेंट है, अर्थात आपकी संकल्प शक्ति, आपकी चाहने की शक्ति कि यस, मुझे अपनी लाइफ में फिर से जॉय चाहिए, फिर से खुशी चाहिए, मैं और सफरिंग नहीं चाहता हूँ। ये जो संकल्प है उसमें भी आपको मास्टर बनना पड़ेगा। टॉलटेक ने कहा है कि जो मतलब जॉन मिगल ने कहा है कि आपको एक नया सपना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम अपने बिलीफ सिस्टम को जो हम कह रहे हैं बुक ऑफ लॉ, जो हमारे अंदर में किताब, कानून किताब बन जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये खराब है, जो भी हम बना लेते हैं कानून की किताब, उन सबको तोड़ने के लिए हमको एक नया सपना देखना है। और हर जगह से हमको प्यार महसूस करना है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं पीपीटीज दिखाना चाह रही थी पर पीपीटीज दिखाने का टाइम नहीं है सर मैडम। तो आपको पूरे समय यही विजुलाइज करना है, एक नया सपना देखना है कि हर चीज से, चाहे सामान हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, हर हर चीज से आपकी तरफ प्रेम की किरण बह रही है। आप उस प्रेम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर आप अपनी आंखों से हर एक को प्यार की नजरों से देखो। ये जो भी लोग हमको कहते हैं, अपने इमोशनल गार्बेज हमारे ऊपर फेंकते हैं, उस इमोशनल पॉइजन को बिल्कुल भी आप मत लीजिए और प्रैक्टिस करिए। और हर दिन को, इन्होंने जो एक सेंटेंस कहा था मुझे बहुत पसंद आया। एक तो अपने आप को पूरे समय रोज सुबह उठ के अपने आप को एक योद्धा के समान समझिए कि आज मुझे अपने आप से ही लड़ाई लड़नी है, अपने वर्ड्स, अपने वायरस और दूसरों के वायरस, सबके खिलाफ मेरे को तैयार खड़े होना, एक वॉरियर के समान आपको जीवन जिया है। और जो मेरा फेवरेट सेंटेंस है कि हर दिन को आप आखिरी दिन समझिए। अगर आपको मालूम चल जाएगा कि ये आपका आखिरी दिन है तो क्या आप किसी से नफरत कर पाएंगे? क्या किसी से आप बदला लेना चाहेंगे? नहीं। मरने के समय हर इंसान बहुत करुणावान, बहुत प्रेम पूर्ण हो जाता है कि अब मैं तो जा ही रहा हूँ, चलो अब ठीक है, जो भी हुआ लेट गो कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो जो मौत का देवता है, वो आपको, जो एंजल ऑफ डेथ है, वो आपको आके कहता है कि आपके पैसा, आपका रुपया, आपका हक, आपकी पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ मेरा है, आपका कुछ भी नहीं है। मैंने आपको उधारी दिया है कि जब तक के आप पृथ्वी पर रहेंगे इन सबको आप उपयोग कर सकते हैं, और जिस दिन मैं चाहूंगा ये सब चीजें मैं आपसे छीन लूंगा। तो ये जो एंजल ऑफ डेथ है जो हमें कह रहा है, उसको हमको ध्यान से सुनना चाहिए। और हर रोज हमको अपने आप को कि मेरा ये आखिरी दिन है वैसे समझ के अपने जीवन को बहुत ही प्रेमपूर्ण और अच्छे से जीना चाहिए। जब हमारा आखिरी दिन है तो क्या हम किसी के लिए ग्रज रखेंगे? नहीं, हम सबको माफ कर देंगे। तो आखिरी दिन समझ के जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको माफ करते जाइए, उसके प्रति करुणा रखते जाइए, उसके प्रति प्रेमपूर्ण होते जाइए। आपका फोकस आपके वर्ड्स, आपके सोचने और आपके कर्मों पे रहना चाहिए। सामने वाला जो भी कर रहा है उसे माफ कर दीजिए और कंपैशन रखिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।